शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में 3 डेज ग्रैंड एक्सपो मुनक्किद किया जा रहा है। बतारीख 24, 25 और 26 जनवरी को यहाँ पर कई सारे बेहतरीन व बेमिसाल प्रेजेंटेशंस पेश किए जाएंगे, जहाँ आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग फील्ड से बेहतरीन डिज़ाइंस और आइडियाज़ पेश किए जाएंगे। ये 3 दिनों का ग्रैंड एक्सपो जो कि अवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ भी बन रहा है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। Hi everyone, this is Balbir Gandhi from ACETEC and we are here at High-Tech's Exhibition Center, Hyderabad for 3 days, 24th, 25th and 26th of January. We have a whole lot of exhibitors displaying different variety, covering different segments of the industry of architecture, interior design and construction, and we would love you to come and visit the exhibition from 10 a.m. to 7 p.m. from 24th, 25th and 26th of January, High-Tech's Exhibition Center. Thank you. See you soon. We have more than 150 exhibitor booths displaying different products, be it doors, windows, switches, lights. I am right now standing in one of the lounges made by I am right now standing in one of the lounges made by Hetwiti from NA Architects, and they have even displayed a lot of different collection when it comes to furniture. So please do come over and see the show, and I'm sure it's going to be a great experience. Thank you so much. नमस्कार, मैं हिमाद्री शर्मा, सीनियर आर्किटेक्ट फ्रॉम चिराग डिज़ाइन स्टूडियो। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ आर्ट इंस्टॉलेशन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट वी हैव टेकन फ्रॉम धोबी घाट, एंड द कॉन्सेप्ट इज़ आज़ादी कहानी कपास की। इसमें हमने जो दिखाया गया है वो ये है कि कैसे कॉटन बड की शुरुआत होती है और कैसे वो वार्डरोब्स शेल्फ्स में पहुंचता है कॉटन बड एक गारमेंट बन के। तो ये सब हमने इसको ह्यूमन लाइफ से रिलेट किया है और इसमें ये सब दर्शाया गया है। ये पूरे जो केस बुक है उससे लिया गया है सीरीज़, दैट्स अ सीरीज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ द पोएम्स। Thank you. Good morning. I'm Sandhya, representing Chirag Design Studio at ACETEC 2025. We are here and this is our art installation. The installation is inspired by Guldar Sahab's case, a collection of poems where he has written about the legends who left a lasting mark on his heart, and the concept has been taken from Dhobi Ghat. So here we are talking about the journey of clothes, and we are reconnecting it with the journey of human life, like how the journey of the clothes starts with the cotton bud, and then it's plucked, it's taken to the factory, it's then woven into thread, and then into clothes. The clothes then reaches the shelves of the wardrobe, shelves of the showrooms, then it comes to our home, our wardrobe, and we wore it, and again it's been sent to Dhobi Ghat. So there again it meets its elements, the water, the air, the sun. Similarly, human, like it's born, its child, we deal with a cotton bud, very soft, kind at heart, the child is that. But when we grow up, we deal with the societal norms, we face many challenges in life. At the end, we become something in life, like the legends.